Hey everybody, we're live and in stereo, and I have not wait, yeah, wait. I have not attached my mic for some reason. Let's attach the mic. Yes, now we are live and in stereo. Yes, we are live and in stereo. I'm not doing quest. I'm not doing the theoretical side of it. We are doing MCQs, and I've already covered my entire AS level course. This is just questions. These are just questions that I am going to do with my AS level students and you all, because all the other bunch are normally sleeping at night and in the morning. I don't know what they're doing with their lives. But yes, that's why I sent the link everywhere. Those who struggle with doing the analytical chemistry questions, though, you guys can watch these videos and it'll be so helpful to you. You'll be able to do everything. But if your concepts with regard to analytical chemistry are extremely poor, then I can't do anything about it. Then you are cooked effectively. You have to first fix your concepts, then you can take. But if your concepts are good and you just find it difficult to do questions, which is highly unlikely, because if you find it difficult to do questions, that means your concepts aren't good. But yeah, other than that, it's okay. So I'm going to just start off with the 2024 set for analytical chemistry, analytical techniques, and I teach it after I teach the entire course. We're done with entire course. Sara course khatam ho gaya. 10 minutes mein I can't teach you guys the summary of analytical chemistry. And when I'm going to solve these questions, your chemistry will be revised on your own dot. So please, this is not a lecture. I'm going to solve questions in such a manner that it'll help you out. Don't worry. Even if you don't know jack shit, it's okay. You slowly and gradually just keep up with me and ho jayega. ठीक है? So let's start off with the first question, the 2024 set, without further ado. The question says, the diagram shows the mass spectrum of a single sample of chlorine. So you have chlorine, nothing else. Great. And he's saying peaks V, W, X, Y, and Z are labeled. So you see a peak at V, at W, at X, Y, Z. Now, obviously, you don't need to analyze this in its entirety, because this part of the graph that you learn in A2 chemistry. This part of the graph you learn in A2 chemistry, but I want to analyze it for you just for conceptual purposes, right? So what do you mean analyze this spectrum for you? Let me show it to you. Basically, if you go on to your x-axis, you have mass to charge ratios, right? And on the y-axis, you have relative intensity, which is effectively your abundance. Now, if you start counting here, because you're dealing with chlorine, this is 30, 31, 32, 33, 34, 35. So effectively, you are witnessing a chlorine 35 isotope at V. This is chlorine 35, by the way, right? And obviously, I'm going to add a positive charge to it, because remember, whenever these fellas are detected, they are first ionized, and that's why we say mass to charge ratio, because we make it into a 1 plus ion first, right? So you have a Cl35 ion effectively on V. Then on W, what do you have? This is 35, this is 36, 37. So you have a chlorine 37 fella on W. And look at the beauty here. Look at the beauty. He's shown you the graphs. He's shown you the peaks for it effectively. And if you see the peaks, the chlorine 35 peak is about 3 times the chlorine 37 peak. Have you not studied something like this? The chlorine 35 peak is about 3 times the chlorine 37 peak. Can I say this, that this is about 3:1? I can absolutely say this. And if it's 3:1, can I figure out the relative atomic mass of chlorine through this? Absolutely, I can. I'll say, hey, mass number, which is 35 times by the abundance, which is 3 in the ratio 3:1. And then mass number of chlorine 37 times by the abundance, which is 1, divided by the total abundance, which is 4. And what does that equal to? That will equal to 35.5. So effectively, you can literally calculate the relative atomic mass with the help of using these peaks, because see, it's in 1:3. You could use the same idea, or you could say this is 75% and this is 25%. But if you use the idea of 75 and 25, it may not give you the correct answer here, because the reason is you will plug in 75 and 25 here, but some dumbo students, they are going to look at 80 and 85 here maybe, and they say, hey, V is 85 and this is 25, and they might not get the same answer for it. That's why look into the ratios for it instead of looking at 85 or 25, or you could just plug in 75 and 25. So do not plug in 85 or 25. They've just given this to confuse you guys, right? So you can calculate the AR from this particular spectrum, right? Done. This mass spectrum, done. So this is one thing I realized. Acha, what is X, Y, and Z? What is X, Y, and Z? X, Y, and Z. If you check out X is chlorine, but it's 70. What that means is that chlorine may not be present in the form of an atom, it may be in the form of a diatomic molecule. And chlorine 70 here, if you are witnessing 70 on the x-axis, the mass is 70. That means what? That means both the chlorine isotope, both the chlorine atoms are going to be chlorine 35 atoms.
Only then would it be 70 rest, and I'm going to add a positive charge over it. Why? Because again, mass to charge ratio, the only reason you are able to detect these fellas is when you ionize them. I've even taught you how the mass spectrometer actually works, right? So it first ionizes it, vaporizes, ionizes, acceleration, detection, all of that, acceleration, deflection, detection, all of that. Well, although that is not part of your course. If you look at y is 70, 71, 72. Why is 72? What does that mean? That means one of these fellas would be chlorine 35 in the chlorine molecule, and the other fella would be chlorine 37. And that is chlorine, that is going to give you a mass of what? A mass to charge ratio of 72. And then one is 74. What does 74 mean? That both the chlorine fellas are chlorine 37. Both the chlorine atoms in Cl2 are chlorine 37. Only then does this equal to 74, right? See, this is 70, this is 72, and this is 74. And in A2 chemistry, you learn that you call this fella the M peak, you call this the M plus 2 peak, and you call this the M plus 4 peak. Although the M peak, M plus 2 peak, and M plus 4 peak for the chlorine molecule is not part of your course. I'm just analyzing this graph for you because it's tested. I'm just analyzing the spectrum for you, although you don't need to know this spectrum as of now, right? You don't need to know which of these is the M peak, which is the M plus 2 peak, and which one of these is M plus 4. You study this in A2 chemistry. You just need to know that, hey, if it's 70, that means both the fellas are 35, 35. If it's 72, one of the fellas is 37, and if it's 74, both of the fellas are 37 and 37. Yes, I'll upload this onto YouTube. Done. And in A2 chemistry, you learn the ratio between the M peak, the M plus 2 peak, and the M plus 4 peak for chlorine. It is 9:6:1. That's the ratio of these two. The M peak, the M plus 2 peak, and the M plus 4 peak, they are in the ratio 9:6:1. Do you need to know this to solve this question? Probably not. I'm just analyzing it for you. Just analyzing it for you. And by the way, in A2 chemistry, you also learn that you can use the M peak, the M plus 2 peak, and the M plus 4 peak ratio to be able to calculate the relative molecular mass of chlorine. How can you directly calculate the MR of chlorine? What do? You say, okay, you take the mass number, times it by the relative abundance. Take the mass number, times it by the relative abundance. Take the mass number, times it by the relative abundance. Obviously, these abundance are effectively ratios, but it's the same thing. So mass number is what? Mass number is 70, times it by the abundance 9, plus mass number is 72, times it by the abundance 6, plus mass number is 74, times it by the abundance ratio 1, and divide by the total abundance, which is in the form of ratio. 9 plus 6 is 15, 15 plus 1 is 16. If you do this, what do you get? I think you get 70.9. And that's effectively equal to 71, which you see for chlorine. That's the relative molecular mass of chlorine, isn't it? This is what you do in A2 chemistry. Yeah, Shahid, I literally told you this is not part of your course. This part of the spectrum is A2 chemistry. The M peak, the M plus 2 peak, the M plus 4. These ratios are part of A2 chemistry, not AS chemistry. I don't know why they've tested it here. I haven't done these MCQs beforehand. I'm doing them for the first time with you. I'm just analyzing the spectrum for you, right? So that's the idea. You just need to know this much of the spectrum. Okay, if it's 70, these are the two fellas. If it's 72, these are the two fellas. If it's 74, these are the two fellas. But you can actually even use them to figure out the relative molecular mass, right? Done, everybody. Asan? That's the idea now. That's the idea that we are dealing with. Now he's saying, let's look at the questions now. He's saying the relative atomic mass of chlorine, the relative atomic mass, which he's talking about, the AR of chlorine, can be calculated from the abundances of the mass to charge values of two of the peaks out of 5. Yes, two of the peaks. Which two peaks? The V peak and the W peak, because from the V peak and the W peak, you have the mass to charge ratios of both, that is 35 and 75, 35 and 37. These are the mass to charge values, sorry, not ratios, values. And you have the ratio between V and W, which is 3:1. So you can actually calculate the relative atomic mass. Those students who would have used 85 here and then would have used 25 here and calculated it, probably you wouldn't have gotten the correct option here. But the idea is not to use 85 or 25. You need to be very crystal clear that you could use these peaks in the form of ratio to figure out the AR, and we've already done that. See, 35 times 3 plus 37 times 1 and divide by 4, right? That is going to equal 3 plus 1, that's 4. So yes, I can absolutely figure out the relative atomic mass. I've already done that. Then 37 grams of the species is responsible, the 37 grams of species responsible for the Z peak. Now, which fella is responsible for the Z peak? See, it's 74. If it's 74, that means it is Cl2, but which chlorine 2 atoms are involved? So one is the chlorine 37 fella and the other one is also chlorine 37. These are the fellas involved. These are the fellas involved in giving you guys
In giving you guys what? In giving you guys a mass to charge ratio of 74, right? So he's saying that 37 grams of this species has these many molecules. Okay. Does 37 grams of these species actually have these molecules? It's simple mole question. What do we do first? Mass equal mole times molar mass. He's given me the mass, which is 37 grams. I need to figure out the moles. And what is the molar mass of Cl2 for Z? That is 74. 37 plus 37, 74, right? 37 into 2 or 37 plus 37. What do you get? How many moles do you get? 37 divided by 74. You get 0.5 moles. So you effectively have 0.5 moles in 37 grams of this species, right? 0.7, 0.5 moles of Cl2. And then he's not asked you about the moles of Cl2, he wants the molecules. So what do we do? Can you go from moles to molecules? Absolutely, I can. Sir, how do you figure out the molecules? The number of molecules equals mole times Avogadro's constant. So how many moles do we have? 0.5. What is the Avogadro's constant? 6.02 into 10 to the power 23. And it's actually absolutely half of 6.02 into 10 to the power 23, which is 3.011 into 10 to the power 23. This is a simple mole question that if they are asked of Cl2. Sir, are there any tricks for remembering how to calculate values in mass spectrometry? What do you mean values in mass spectrometry? I don't know what you mean. The values, the mass to charge values are given on the x-axis, right? So this is absolutely correct, isn't it? You absolutely do have these many molecules in zero point 0.5 moles of chlorine or 37 grams of chlorine. Right? Because obviously grams and molecules do not have a direct relationship. You would have first gone from the grams of Cl2 right here, which has a molar mass of 74, and then you would have figured out the moles, and then from the moles we figure out the molecules, and we say, hey, that's absolutely equal to this, right? Then the relative molecular mass of chlorine can be calculated. See, the relative molecular mass, the MR, of chlorine can be calculated from the abundances and the ME, or the mass to charge ratio, or the mass to charge values of the peaks X, Y, and Z. And absolutely you can do this. See, he has not asked you to calculate it, has he? He's not asked you to calculate it. He's just said, can you calculate it? Yes, you can. If you have the molecular ion peaks, the M peak, the M plus 2 peak, the M plus 4 peak, you can, I've actually even calculated it for you, but you are not required to calculate it. You should know that you can calculate it. That's all you need to know. That's all you need to know. Right? And if you were, if you did not know what this actually means, you could have actually calculated it. Do it through trial and error. See, you did not know these ratios between them beforehand, but what you can do is you can calculate it. See, this is the intensity, which is effectively the relative abundance. So X peak जो 70 है, the abundance for it is 100. Let's actually even calculate it. चलो, 70 है, the abundance for this is 100. फिर जो 72 peak है, what is the abundance for this 72 peak? The abundance for this is, if you go onto the y-axis, is roughly 65. If I'm not wrong, it's about 65. So 72 times 65 plus 70, 74 times what? What's the abundance here? The ratio 74 times, if you go on to here, what is that equal to? About 10. 74 times 10, you could put a ruler, right? I don't have any ruler. Divided by the total abundance, which is what? 100 plus 65 plus 10. This is just frequency, right? So 100 plus 65, that's 165. 165 versus 175. Can you calculate it? Probably you're going to get 70.99 here as well, or 70.9, or about 71. And you realize, yes, that is the relative molecular mass of chlorine. So you could have practically done it without even knowing the ratios between them. Right? So yes, 3 is also correct. And if I'm not wrong, A should be the correct option. Asan? Sir, how to solve it under a minute though? Well, if I were a student, this is how I would have solved. I would have seen, okay, without looking at anything, I would have first marked this. It would take me probably 10 seconds to do this part, right? This part, catch up, this is 35, 37, this, and I can use these two to calculate AR. So I would have not calculated the AR. I just said, yes, these can be used to calculate AR. One is correct. 37 grams contain these many molecules. I would have said, okay, Z is 74. 74 ka half hai ye, so molecules be half honge. This would have also been right. This is how I would have done it. I can do it in 10 seconds. Why? Because see, 37 grams, and you do this after you have a lot of practice, you can do this. Yeah, 37 grams is literally half of 74, so it should have half the molecules as well. So this is also correct. And XYZ, since these are in the form of molecules and their abundances are given, you can use it to calculate the MR. You can do this MCQ in 10 seconds. My job is not to teach you how good I am. My job is to teach you the real concepts. You can figure out the shortcuts on your own once you have good practice. We did one MCQ in 14 minutes. Great.
Vitamin C has the structure shown. The mass spectrum of vitamin C has a molecular ion peak, which is the M peak, and he's saying that it has the mass to charge ratio of 176 and the relative abundance of 7%. The relative abundance of M peak is 7%. That's awesome. And the M plus 1 peak ka pooch raha hai, what would be the relative abundance of the M plus 1 peak? That's what he's asking. Now, what's the relationship between the M and M plus 1 peak? What's the relationship between the M peak and the M plus 1 peak? The relationship is if you have, and again, you can either rote learn this, yeah, the relationship is that if M peak is 100%, M plus 1 peak is 1.1% N, where N is the number of carbon atoms. You have to know this, right? By virtue of this relationship, you have to know this. But in my life classes, I've taught you guys how this has come about, because the M peak is because of the carbon 12 isotope and the M plus 1 peak is because of the carbon 13 isotope. And you realize that, hey, if you were to roam about in this universe and you find one carbon atom, and you find one carbon atom, do you know what the chance of finding that if you find one carbon atom with carbon 12 isotope, right? The carbon atom that you found is a carbon 12 isotope. Do you know the chance of finding a carbon 13 isotope? It's 1 over 100. And what is 1 over 100? It's 0.11, I guess. 0.11 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.11 कुछ आ रहा होता है, right? So it's 1 over 100th if you want to figure out कि यार what's the probability कि एक carbon 12 है तो carbon 13 की क्या probability? It's 1 over 100th, and then you just convert it into percentage by multiplying this by 100. So this gives you 100% and this becomes 1.1%, and this N represents the number of carbon atoms. This is how you can figure out. 0.1 है लेकिन मैंने तो roughly आपको बता दिया. 0.1 है कि लेकिन roughly it's 0.11 roughly. या 0.11 रफली, क्योंकि 1 over 100 तो मैंने एक एस्टिमेट करके आपको बताया. इट्स जस्ट एन एस्टिमेट दैट आई हैव यूज्ड. ठीक है, तो दिस इज द आइडिया. 0.01 आ रहा है, ठीक है, 0.01 आ रहा है, ठीक है, 0.011 कर देते हैं, ठीक है, खुश. यस, एंड नाउ हाँ 0.011 आ रहा है. अच्छा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक एस्टिमेट मैंने इस्तेमाल की. 0.01 कह लें, 0.011, लेकिन नॉर्मली 0.011 चांस है. फॉर वन कार्बन एटम द चांस इज 0.011 फॉर इट टू बी अ कार्बन 13. So when you multiply it by 100, this is how the relationship comes about, and this is what you need to know. So the M and M plus 1 peak, always the relationship should be 100% and 1.1%, and where N represents the number of carbon. Now he's given you the abundance of M peak, but he's not giving you the abundance of M plus 1 peak. और वो कह रहे हैं कि जी मुझे abundance निकाल के दे. नॉर्मली क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश करें. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज ही इज गिविंग यू द abundance of the M peak, he's giving you the abundance of the M plus 1 peak, and you need to use this relationship to figure out the number of carbon atoms. This is what we normally do. But in this case scenario, he has given me the M peaks percentage, but he has not given me the percentage of M plus 1 peak. So he's not going to ask me to figure out. And in one equation, I can't have two unknowns, can't I? I can't figure out two unknowns in a single equation. Can I do that? I don't have N and I don't have X. I need to find X%, but I don't have N. What do? Sir, N is already given to you. See, the structure is shown. So the number of carbon atoms are already shown to you in this particular question, which is what? 1, 2, 3, 4, 5, कितने? 6 carbon atoms, 6 nodes, 6 carbon atoms are already shown to you. So this N is already given to you, which is 6. And now you just cross multiply. You say, okay, X multiplied by 100%, X% multiplies by 100% equals to 7% multiplied by 1.1% multiplied by 6. Right? The N is already given to you because there can't be two unknowns. Think about it in your brainerinos. Right? And so what happens? The percentage sign cancels out. See, this percentage cancels out with this percentage, right? And you end up with percentage कट जाते, अच्छा 7% है ना, तो percentage कट हो जाते हैं. आपको क्या मिल जाते हैं सर? X 100, X times 100 or 100x is equal to 100x is equal to 7 multiplied by 1.1 multiplied by 6. X equals 7 into 1.1 multiplied by 6 divided by 100. What do you guys get? हाँ जी बताएं जी, क्या मिल रहा है? What percentage do we get? अच्छा 7 के साथ मैंने परसेंटेज इधर मैंने नहीं लगाया, एक जगह लगाए, एक जगह मत लगाए. एक जगह लगा दी ना, बस एक जगह लगाने, एक जगह मत लगाए, ठीक है. मेरा काम वैल्यूज के साथ है. आसान.
देखिए आपको कोई और, मैं आपको मजाक के अलावा कह रहा हूँ, ये थॉट प्रोसेस जो है दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप एक एमसीक्यू करें लेकिन थॉट प्रोसेस के साथ करें, you'll be able to ace your exams. If you can't devise this thought process, you'll be cooked. If you start rote learning this, you'll be cooked. There are teachers in the market, let me tell you something. There are teachers in the market who are actually teaching a rote learned formula. यार ये आप चेक करें, यूट्यूब पे जाए वीडियोस देखें, मेरी मत सुने, यूट्यूब पे जाए वीडियोस देखें, चेक करें, एंजॉय करेंगे। हाँ जी अली, क्या हाल है चीते, व्हाट्सअप। सर अली इज हियर, क्लास को डिस्टर्ब करने आ गए हैं। मेरी रात को ओ लेवल्स की मैराथन है जिगर, ओ लेवल्स की, लेकिन वो 9 बजे से 10:30, 9 से 10:30, बल्कि 9 से 10 समझ लो। वो जैज़ वाली उस पे है जिगर, ओ लेवल्स की जैज़ वाली चीज़ पे। यार अली जिगर वो मास के साथ भी कोऑर्डिनेट करने यार, हम सब की टाइमिंग्स क्लैश हो रही है, उसको क्या क्या टाइमिंग शाइमिंग थोड़ा सेट करे ना। चलो ठीक है अली, बेस्ट है जिगर। सर अली इज़ द गोट ऑफ फिजिक्स बाय द वे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एस। सर अली की 10 बजे की क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ें। अच्छा, यू गाइस कैन चेक आउट द मार्किंग स्कीम्स, आई डोंट केयर अबाउट द मार्किंग स्कीम, आप खुद मार्किंग स्कीम के साथ देखिए करें। अब मजे की बात एक और आपको बता दूं, देर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स इन द मार्केट who put the marking schemes in front of them, their explanations are something else, then they circle something else. That is something totally, astonishing to me कि यार आप कुछ कह कुछ रहे हो, सर्कल कुछ और कर रहे हो, अपने से क्यों ये सेलेक्ट किए, क्यों। मैं आपको सिखाऊंगा मैं सोचता कैसे हूं, सोच सीखें, खुद होगा हर एक MCQ पक्का कसम से। सर आई लव यू, ओ नहीं, हैशटैग नो होमो, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, द relative atomic mass of antimony is 121.76. He's given me the AR. Two antimony has two isotopes. The mass numbers of two isotopes differ by two. आपको पता है मेरे जहन में क्या आ रहा है? सर इज दिस ओनली आई इंफ्रारेड, इंफ्रारेड स्कोपी, नो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है पहली बात। सारी चीज़ें यार मिला के 19th चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, वो सारी चीज़ें। प्लीज डोंट यूज द DM वाला थिंग यार, सर प्लीज थोड़ा एनर्जी डोनेट कर दे। नहीं नहीं मूवीज चिल, एवरीवन। अच्छा, अच्छा, do you know what comes to my mind? And this as a student should come to your mind. What is coming to my mind? He's saying it has two isotopes and they each differ by two. Which particular fella do you guys know which has two isotopes and differs by two? You should know these things. It should come in your brain. अच्छा, कौन सी चीज है जिसका AR हम कैलकुलेट करते हैं and their isotopes differ by two? What? Chlorine 30, in my brain this is what comes to me: chlorine 35, chlorine 37, or bromine 79 and bromine 81. This is what is coming to my mind. Carbon 12 and 14, if that's coming to your mind, good enough, but I'm pretty sure you don't know the percentages of carbon 12, 14. For chlorine 35 and 37, you guys already know. What's the percentage abundance? This is 75% and this is 25%, isn't it? And then when you calculate the air, either say 75% or 25%, or say 3:1. And then you, yes, bromine ka bhi aata hai. And then you say calculate the air. What do you do? Mass number times the abundance plus mass number times the abundance divided by the total abundance. Sir, you have not even read the question. Why are you doing this? Because this is how your brain should think instinctively. You shouldn't start solving it. I'm solving it in front of you to give you that thought process. Kariji, what is the relative atomic mass? 35.5. And what do you notice here? Think about something. What am I noticing? I am noticing कि अच्छा, if antimony is present as well, antimony present. What is the symbol for antimony? Does anybody know the symbol for antimony? AT है क्या है? वो तो एस्टेटीन है यार, AT if I'm not wrong. What's the symbol? SB है। अच्छा, SB is the symbol for antimony. Somebody is saying so. SB. Now I don't know the mass numbers for it. I don't know the mass numbers for it, right? But if this is chlorine 35 and this is chlorine 37, this is chlorine 35 and 37, the relative atomic mass that I end up getting is always going to be in between the two, isn't it? Is always going to be in between the two. So if this is 35 and 37, and see 35 ये है और relative atomic mass 35.5 है. So effectively if I were to just assume कि अच्छा ये अगर मेरे पास इसका AR 121.75 है, मैं क्या assumption लूँ कि what should be the mass number of this particular isotope? If the AR is 121.75, I know these should differ by 2, but what should be the first one? Should it be 120, 121, 122, 124? See, this is 35 and the AR is 35.5. So if this is 121.75, this should be 121.
This should be 121. And then if they differ by 3, this should be 123. This is how I'm going to use my brain. This is how I'm using my brain. आप देखें पूरी मार्केट में कोई ऐसे पढ़ा के दिखाए. यार मैं अपनी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा, मैं अपनी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि यार अक्ल को हाथ मारो, अपनी दोस्तों की मदद करो. हेल्प योर फ्रेंड्स आउट, टेल देम टू जॉइन दीस फ्री क्लासेस, टेल देम सो दे कैन आल्सो बेनिफिट. डोंट बी सेल्फिश, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीस थिंग्स. ठीक है ना? सो 121 and 123, डू यू सी हाउ आई थिंक अबाउट इट? डू यू सी हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दिस? एंड देन now, what is the question? The question is the isotope with the lower mass number is more abundant. The isotope with the lower mass number is more abundant. Acha, if I look at the chlorine 35 example, the isotope with the lowest mass number is more abundant. So yes, 121 should be more abundant, right? 121 should be more abundant. And what is he saying? Sir, what is the percentage abundance of the one with the higher mass number? So he's asking, acha, iski percentage abundance na? You already studied this in O-level IGCC. What do? Sir, if there are two isotopes, AR is given to me, I'll say, okay, iski abundance is X%. I don't know the abundance of the first isotope. And the second isotope abundance, if there are only two isotopes, the second's abundance would be what? 100 minus X, wouldn't it? 100 minus X%. One is X% and the other one must be 100 minus X% because the total abundance is what? 100. अच्छा इसको ऐसे सोचिए. If I say you have a total of 100 toffees and Ali has 10 toffees, how many toffees do you guys have? If you have a total of 100 toffees, Ali has 10 toffees, how many toffees do you guys have? Come on, yaar, basic grade 11, grade 1 level elementary math. How many toffees do you have? If Ali has 10, how many do you have? 90. How did you come up with 90? You did 100 minus 10. So if Ali has X toffees, what do? 100 minus X. That's why I said if one is X, the other one should be 100 minus X. Done. ये मैथ के टीचरों को कसूर है कि ऐसे नहीं पढ़ाया हो. So how do you calculate the AR now? The MR, sorry, the relative atomic mass, relative atomic mass. 121 mass number times by the abundance plus 123, which is the mass number, times by the abundance 100 minus X, divided by the total abundance, which is 100, equal to 121.75. Now I'm not a mathematician, I'm a chemist. So what I'm going to do is I'm going to take my calculator and I'm going to solve it with the help of the calculator. Please do not do your own Bernoullis. Do not become, oh, I'm going to do algebra here, 121x plus 12300 minus 123x. Khuda ka khauf kare, just use the calculator. How do you use the calculator? A lot of students don't even know this. Dekhen, I'm going to plug in the calculator 121x. How am I going to do this? I'll click 121, then I'll press on alpha. Check out, alpha is there in your calculator, this button right here, alpha alongside shift. So I'm going to press on alpha, I'm going to press calc. Because when you press, sorry, I'm going to press on alpha and I'm going to press on the parentheses, which on top of which X is written. Look, on top of this, the X is written right here on the parentheses. So this is 121X. See, in the calculator, it has shown me 121X. And then I'm going to do plus 123 and I'm going to put brackets, or you could say 12300 minus 123 alpha parentheses, because that's going to give me X, is equal to, how do you put is equal to? Press on alpha and then press on calc. Alpha and calc, see the red button is alpha and the red button on top of calc is equal to. So I'm going to press equal to here. So alpha calc, that's equal to, and that's going to be equal to 12175 because I have multiplied the 100 on the right hand side. Then what am I going to do? I'm going to press shift calc. I'm going to press what? Shift calc. It will solve for X. Press equal to, what do I get, sir? I get 62.5. What do I get? I get 62.5. So I'm going to say, okay, the answer for X is what? The answer for X is X equals 62.5%. And see, yes, 121 का फैला जो है, the one with the lower mass has the abundance of 62.5%. So what the one with the higher abundance, the one with the higher mass number, उसकी abundance कितनी होगी? 100 minus 62.5, that is what? 30 what? 0.5? 30? 30 what? 0.5? हाँ जी यार बता दे यार कोई मनहूस हो. Sorry guys, 38%. ये 62.5 आ रहा है तो ये 38% आ रहा है. ठीक है, 37.5 आ रहा है. ठीक है, तो about 38%. Yes, about 38%. So what am I going to say? The answer for the higher mass number fella is what? 38%, because he's not asked about the lower, he's asked about the higher. Wait a second Abiha, please hold on. अच्छा, अब इसमें एक बच्चे के जहन में आ सकता था कि सर why did you take 121 and 123? Why not take, let's suppose, why can't I say कि SB और SB इधर जो है it's gonna be like 110 and 112. एक बच्चा ये भी सोचता है. और
कम वक्त ये जो बच्चा ये सोच रहा है सोचें थिंक विद योर ब्रेन्स इफ इट्स 110 and 112 no matter what the percentage is it's gonna the AR is gonna lie between the two but he's saying the AR is 121.75 how can you end up with these two mass numbers if the AR is 121.75 the two isotopes must have a mass number which is between these two number which is between like 121 and 123 because he's saying it differs by 3 only then would you be able to get something close to 121.75 that's the first idea Achha. A student might say okay sir if that's the idea why can't I use 120 and 122 this should come in your brain. Absolutely, Shahid. Nobody will tell you why except for me. I will tell you why. Because Shahid, think about it. I can first solve it as well for you, Shahid. You can solve it, you will not get the answer. You can solve it, you won't get the answer, but I will tell you the shortcut. First, I'll solve it, then I'll give you the shortcut. Okay, if it is 120 and 122, what am I going to do? I'm going to say this is x, this is what? 100 minus x. What do you get? 120 multiplied by x plus 122 multiplied by 100 minus x divided by the total abundance, which is 100, equal to 121.75. Absolutely. What is the value of x, everybody? The value of x is going to be what? Calculated, the value of x is 12%. And what is the value of what is the value of the one that has the higher number? The one that has 122 isotope, one is 12%, the other one is 88%. And if you guys were a little dumbo jumbo, some of you guys might have said, sir, the answer for the higher percentage, the higher fella, which is 122, the one with the mass of 122 is going to be D. So it should be this is the mass number, this is the abundance of the one with the higher mass number. Yes, a lot of you might have also thought about this, wouldn't you have? But what is he saying? He's saying the lower mass number is more abundant. The lower mass number is more abundant. If you take 120 and 122, the lower mass number is less abundant. Shahir, am I lucky? He's saying in the question that it can't be 120 and 122 because then the lower mass number is less abundant. Eh? एक और बात सुने. You didn't even have to calculate it. Now this is the calculation because I want to teach you everything. But you didn't even have to calculate it. Do you know why? Because if you have some brainerinos in you, you would have said, okay, if I use 120 and 122, the problem is that the relative atomic mass is inclined towards what? It is inclined towards 122. And if it is inclined towards 122, that means what? That 122 would have the higher abundance. That's why the relative atomic mass is inclined towards, it's closer to 122. So this fella has the higher abundance. Whereas in the exam, he's saying, no, 122 does not have the higher abundance. The lower mass has more abundance. And if the lower mass has more abundance, that means that it must have been 121 because even in chlorine's case, it's chlorine 35 which has the higher abundance. And only then were you able to get this stuff, 35.5, right? So you couldn't have taken 120 and 122 because 120, the AR is 121.75. It lies closer towards 122 then. And that means this has the higher abundance. But the examiner is telling you, no, 122 ka higher abundance, 120 ka higher abundance. Yes. So you could have also done it logically without solving it. Got it? करा के दिखाए कोई मार्केट में से हाँ अगर मेरे से पढ़ ले तो शायद कर लें कुछ So that's why he gave you 12% and 88%. You know, that's the reason. Examiner is not stupid. In A levels, he does not give you options which are completely blank. He's gonna give you options which you can which you solve in an incorrect method and you're gonna get that option. So you might think, oh, ये तो correct है. But is it correct? What it? बड़ा आता है A level के MCQs में. It's easy यार. Somebody saying, sir, what if I take 121.75 and 123.75? The lower one has 100% abundance. Junaid, you could have done that, but then the problem is कि अगर lower one को आप 100% abundance इसका मतलब है कि दूसरा isotope तो है ही नहीं. तो ये 123.75 कहता है. And one more thing to keep in mind. One thing to keep in mind, Junaid, one more thing to keep in mind. अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है. Sir, अच्छा sir, could I have not taken this? What if I do something like this? 121.25 and SB, like Junaid is saying, 120, 1.25 ले लूँ और 122.75 122.25 ले लूँ. इनमें भी तो फर्क है. ओ खुदा का खौफ करें, mass number cannot be in points. The relative atomic mass can be in points. The mass number कैसे point में हो गया? Mass number is what? It is the total number of protons plus neutrons in the nucleus of the atom, isn't it? How can neutrons be in 0.25?
हाउ कैन न्यूट्रॉन्स बी इन 0.75? मजा आ रहा है? ये होता है जब आप एक्चुअली में केमिस्ट होते हो, मिनी केमिस्ट। टिक 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 टिक। अभी है सिंह, आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी आप मेरे लेक्चर्स देख लो, मैं क्या कहूँ? मैं क्या ही कर सकता हूँ? व्हाट डोंट यू अंडरस्टैंड? दिस नॉट अ क्वेश्चन, व्हाट डोंट यू अंडरस्टैंड हियर अभी? एक क्वेश्चन पे मैं 15 मिनट लगा दिए हैं, बस मैं खुदा को, और हर किस्म का सवाल मैंने आंसर कर दिया। बताएं। अच्छा बताएं बताएं अभी, हाँ। यूज द माइक अभी, हाँ। सर लेक्चर्स फ्री में दे दे तो तब। मर जाओ, खुदा का खौफ करो। फ्री में दे दे तब। द लास्ट पार्ट, विच लास्ट पार्ट? दिस 0.25 देखिए। Isotopes have a mass number अभी, हाँ। You would have also studied this in O level and IGCSE, mass number, nucleon number. यू डोंट नीड टू, अच्छा मेरा आई साइड, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। देखिए अभी आप खुद सोच लगाए ना। अगर क्लोरीन में दो आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन 35.5 है, इसका मतलब क्या है कि 35.5 इसके ज्यादा करीब है, तो इसका वेट बड़ा होगा। अभी यार दिस पर्सन विल हैव ए हायर वेट, मोर अबंडेंस। यस, वेटेड एवरेज में इसका वेट ज्यादा होगा, इसीलिए तो ए आर इसके करीब आ रहा है ना। इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, इसलिए तो इसके करीब आ रहा है। एंड दैट्स द प्रूफ हियर। देखिए 75% है, दैट्स द आइडिया। तो अगर आप 120 और 122 को देखो, इसके ए आर का 121.75 है। तो इट मीन्स कि इसकी परसेंटेज, इसका वेट ज्यादा होगा, 50% से इसका वेट ज्यादा होगा। अगर 50% होता, इट वुड हैव बीन 121, बट इट्स मोर देन वन, it's more than 121, so this would have been this has a higher percentage. And we said that this fella should have the higher percentage. That's why um these two can't be the isotopes ka mass. Now got it abhi? चलो, I'm glad you got it now. No problem यार, ये दो दो एमसीक्यूज पे अगर हम इतना टाइम लगाना, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन अच्छी बात है, इट्स क्लियरिंग आउट योर कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड। Before I even read anything, so this is a broad peak, and broad peak is always the OH of the acid. That's it. The broad peak is the OH of the acid, and 1700 के around ये जो peak होती है, this is the carbonyl peak. You should know this by heart at this point in time. I have taught it to you guys in 45 minutes. बड़ा simple है, ये बड़ा simple. So effectively what do you have? You have a carboxylic acid. Now I think compound X reacts with acidified potassium dichromate to form compound Y, and the infrared spectrum of compound Y is shown. So compound Y we know is carboxylic acid. और वो कह रहे हैं कि कंपाउंड एक्स हैज रिएक्टेड विद दिस टू फॉर्म कंपाउंड वाई। नाउ compound X, this is an oxidizing agent. So compound X must have been oxidized to give you carboxylic acid. And which substance is oxidized to give you carboxylic acid? It's either it's either an aldehyde which is oxidized to give you carboxylic acid, or it is a primary alcohol. These are the two options. These are the two options. Just not just aldehyde. It can also be a primary alcohol, can't it be? Primary alcohol, when you react it with acidified potassium dichromate and you don't heat and distill it, it will form a carboxylic acid. If you heat it under reflux, here he's not mentioned anything about heating and distilling it. If it was heat and distilled, I would have said it's aldehyde. So we realize that it can X can either be aldehyde or it can be primary alcohol. चलिए जी, सवाल देखिएगा इसका। इसके सवाल तो इतने सीधे सीधे, I don't even have to look at this bullshit. What is the identity of compound X? It can either be a primary alcohol or it can be an aldehyde. Because these are the two things which are oxidized to give you carboxylic acid. Propan 1-ol, yes, it can be a primary alcohol. Propan 2-ol, this is oxidized to ketone, and ketone will not show you this broad peak. B is wrong. Propanone is not compound X. Propanone is a ketone already, and ketones cannot be further oxidized. That's what we learn in A level chemistry. C is wrong. Propanoic acid नहीं हो सकता। ये तो acid में कैसे हो सकता है? If he said what is compound Y, compound Y could have been propanoic acid. Compound Y could have been propanoic acid, but he's not asking about Y, he's asking about X. So D is wrong. ये इसके सवाल है कि कैसे नहीं हो रहा आपसे एनालिटिकल, कैसे नहीं हो रहा बताएं, इसमें क्या है? अच्छा, वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, ये जो ब्रॉड पीक होते हैं ना, इसमें यू ऑल्सो हैव सी एच बॉन्ड्स हियर, बट दे आर ओवरशैडोड बाय दिस ब्रॉड पीक। एंड व्हाई डू गेट अ ब्रॉड पीक? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट हैज एक्चुअली डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन 40, और सॉरी क्वेश्चन 5, 40 कह रहा हूँ, 5।
Acha, a sample of butanoic acid, which means there's a double bond as well. Butanoic acid, he's even shown you this, is analyzed using infrared spectroscopy. The infrared spectrum shows a broad peak 2500 से 3000 से 2500 से 3000 पे broad peak वो कह रहे हैं कि OH of carboxylic acid है. OH of carboxylic acid. That's why there's a broad peak. OH, because of the OH. Remember, it's because of the OH. Which OH? OH of carboxylic acid. But the broad peak is because of the OH. Right? Now, what is he saying? Which bond is responsible for this peak? It is not C double bonded to C, not CO, not C this. It's the OH and OH of carboxylic acid. It's not C double bonded to O. C double bonded O is responsible for the sharp peak at about 1700-ish. ये है यार, ये जी मतलब ये कैसे नहीं हुआ है? इसके सवाल तो इसलिए आखिर में आते हैं, ये तो टक का सवाल होता है, टक का जवाब होता है इसका. एनएमआर जब आप पढ़ेंगे A2 केमिस्ट्री में, एनएमआर इज एक्चुअली टेक्निकल. दैट्स द ओनली चैप्टर आई से एएस में और A2 में वो वाहिद चैप्टर है जो मैं समझता हूँ एज ए टीचर, वो मैं अपना थॉट प्रोसेस शायद उतने अच्छे से किसी बच्चे को वो इम्पार्ट ना सके, बिकॉज एनएमआर ऐसी चीज है कि वो दिमाग में बैठती है. तो उसमें इतनी सोच एक साथ होती है कि एक एनएमआर का सवाल अगर मैं आपके साथ करूंगा वो होगा 1 मार्क का और मैं वो करूंगा 20 मिनट में, क्योंकि मेरे जहन में तो हो गया होगा, लेकिन वो अब ट्रांसलेट करना असल कमाल होता है. इसलिए जब A2 अगर मैं शुरू करूं आपको मजा आएगा. एनएमआर कोई टीचर सही नहीं पढ़ाता, हर टीचर कहता है 1 मार्क का सवाल होता है छोड़ दे. क्यों भाई, क्यों छोड़ दे? मर जाओ, क्यों छोड़ दे, मर मुड़ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is something beautiful. See this peak right here, it is because of the carbonyl. We know this. This should be in your brain at this point. 1700-ish peak carbonyl. Then you also see a peak right here. That's beautiful. And it's a very vivid peak with you. I don't know what this is. I'm going to check with the table now. See, some things you have to check, some things you need to know. Achha. And what is this? This is neither a broad peak nor is it a peak. Neither is a broad peak. या मैं कहूँ ये OH of acid है. It's not the OH of acid, because if it were the OH of the acid, it would have been a very broad peak like so, like this. Right? If it was the OH of the acid, it's not the OH of the acid. Now, what is it? Is it the OH of the alcohol? No. The OH of the alcohol would also have a peak which would look something like this. अच्छा, मैंने आपको peaks दिखाए, but you can even use the numbers at this point. See, the OH of the acid should be from 2500 to 3000. See, 2500 to 3000. This is 2500 to 3000. This entire place is empty. This entire place, the OH of the acid, this entire place is empty right here. So it's not the OH of the acid peak. Then check this out. If can it be the OH of the alcohol? The OH of the alcohol should be about 3200 to 3600. 3200 say 3600. See, 3200 to 3600. It's all empty. There's no peak here. It's all empty. All empty. So it's not even the OH of the alcohol. So what exactly is this, sir? It is the CH bond. Remember, I told you even above that the CH bond is overshadowed. The CH bond is right here. It is overshadowed by this broad peak. So if you don't have the OH of the acid and the OH of the alcohol, then the third guess for me is that it's the CH of the alcohol, is the CH bond right here. See, and if you check out the CH bond alkane, see, it's 2850 to 2950, and that is the peak somewhere around here. See, 2850 से लेके ये 2850 से लेके about 2950 तक ये peak है. तो this is the CH peak. अच्छा ये सी, अच्छा ये क्या पीक है? 1100, 1200, 1200 और 1300 के बीच में कोई पीक है? 1200 और 1300 के बीच में, 1000, 1300, 1200, 1300, 1200, 1300. If you look at all the options, this is the only thing that makes sense. CO bond right here, the CO bond यही है. 1200 से 1300 में तो यही मिल रहा है मुझे, और तो कुछ नहीं है. तो this must be the CO bond, the CO peak, the peak due to the CO fella. So effectively, you have C double bonded to O and you also have C bonded to O, and that actually indicates क्या है? C bonded to O भी है. See, C double bonded to O भी है और C bonded to O भी है, और फिर आपके पास CHs भी है. So effectively this linkage, इसको क्या, कौन सा linkage कहते हैं? इसको हम कहते हैं ester linkage. इतना सिंपल है ना ये ग्राफ, इतने सिंपल है, मैं आपको क्या बताऊं. एस्टर लिंकेज. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप दैट कुड कंटेन, विच फंक्शनल ग्रुप कुड द कंपाउंड कंटेन? अल्कोहल तो नहीं है जी, वो तो CH का बॉन्ड था. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, वरना ब्रॉड पीक होता. नाइट्राइल तो नहीं है. क्यों नाइट्राइल नहीं है? क्योंकि देखें, नाइट्राइल इज 2200 से 2250. 2200 से 2250 मुकम्मल खाली है, कुछ भी नहीं है इधर. नाइट्राइल भी नहीं है. And the last answer is ester. You could have even done it through elimination method. बस
खत्म क्यों और प्रैक्टिस कराओ। 2024 सेट इज डन। खत्म क्यों और प्रैक्टिस कराऊं, बताएं जी, आपके ऊपर। इट्स अप टू यू गाइस। कराऊं बस खत्म। आई एम आस्किंग माय स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। आप लोग कहते सर एनालिटिकल की प्रैक्टिस आपने नहीं कराई, बताएं जी, और कराऊं कि खत्म, बस ये काफी है। और कराऊं 2023 का सेट कराऊं, बताएं जी। रायमा किधर है यार, वेयर इज रायमा। व्हाई इज रायमा नॉट इन द क्लास। रायमा बुरी बात है यार। रायमा ने कहा था, और किसने कहा था ग्रुप में, मैं ग्रुप खोल के चेक करता हूँ ना, 115 बच्चों में से किसने कहा था। जिस जिस कहते हैं फिर वो क्लास में नहीं बैठती, ज्यादती है ना। दिस इज ज्यादती। या तो आप फिर मुझे कहे रिकॉर्डिंग बना दें, नहीं नहीं सर लाइव पढ़ाएं, तो लाइव आप बैठते नहीं हो, मैं रिकॉर्डिंग तो बना दूंगा, मैं मुझे क्या जाता है। किसने कहा था, रोके मैं जरा ग्रुप खोलता हूँ जरा, किधर है रजिस्टर्ड ग्रुप हमारा। 100 से ऊपर बच्चे हैं, और ये इधर आए हुए हैं। इधर जो बच्चे आए हुए हैं उसमें बाहर के बच्चे भी हैं। ये है, किसने कहा था कि ये करा दें, चेक करते हैं। अगर वो ना हुआ ना, मैं गला दबा देना। वानिया की तरह, वानिया वानिया है क्लास में। वानिया वानिया वायना, वायना है कि वानिया है। वानिया अली, वानिया अली क्लास में है। यही आप तो हर क्लास में होते हो, आप तो मेरे चहीते हो। वानिया अली क्लास में अब नहीं है। वायना आर यू वानिया अली। नो यू नॉट वानिया अली है, वायना तो और है ना। ये हाल है यार, ज्यादा। सर आई एम वाइन, वाइना नॉट वानिया। चलो, ये हाल है यार। अब मुझे खुद बताएं आप लोग, मैं क्या करूं। मैं मर जाऊं क्या करूं, छत से छलांग मार के मर मुड़ जाऊं, मैं तो आपको कराता जाऊंगा, प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, करा मुझे क्या। सॉरी सर, डोंट बी सॉरी, किल योर सेल्फ। तुसी ग्रेट हो। थ्री इडियट्स किसी ने देखी। यू आर ए जेम, थैंक यू, लव यू ऑल यार। मुझे तो सिर्फ मजा तब आता है कि बच्चे ज्यादा क्लास में बैठे हैं, मजा आता है यार फिर। ये आखिरी दिन पे ये सारे रिपीट करेंगे, मेरे से ही पढ़ेंगे फिर। ये जो बच्चे क्लास नहीं लेते ना, ये दोबारा रिपीट करके मेरे से ही पढ़ेंगे, वो कहेंगे मेरे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे ऐसे हो, अल्लाह ना करे ऐसे हो, बट ए लेवल्स में ऐसे ही होते, इतने बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं। और वो रिपीटिशन कैसी होगी वो भी मैं आपको बता दूं। मैं 2023 का भी कर दूं, बताएं जी, टेल मी, डू यू गाइस वांट मी टू डू 2023 सेट एज वेल, बताएं आप, इट्स अप टू यू गाइस। मैं मुझे करने में कोई इतराज नहीं है, बताएं। इफ यू वांट मी टू डू मोर प्रैक्टिस आई कैन डू इट, इट्स ओके। सर लिटरली वन सर, दैट वन सर यू हेट मेड मी इतना, मेड दिस इतना हार्ड। यार आई हेट हिम बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, या आई डोंट हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज पढ़ाई। सर जी नेक्स्ट ईयर आप एएस पढ़ाएंगे। आई डोंट नो जुनेद, मे बी आई डू, मे बी आई डोंट नो। आई डोंट नो अबाउट माई सर, व्हाट इज सर नेम, नो 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 प्लीज़, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट एनी टीचर हियर, बस छोड़ दें। मुझे उससे उसके मसले, मुझे उसकी मुनाफिकत से बस मसला है, नफरत है मुझे उसकी मुनाफिकत से। फ्रॉड या कहीं का। करें जी, 2023 के सवाल करें। करनी है कि नहीं करनी, करें। सर प्लीज टीच A2 नेक्स्ट ईयर। मोइज सिंह मिस करा दे। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट मी टू मिस करा दूं। बता दें यार, पहले से बता दें, फिर ये ना हो सर आपने सिर्फ 6 MCQs करा दिए। जो 6 मैंने कराए हैं बड़ी डिटेल में कराए हैं यार। बताओ बताओ, मैं मुझे करना मसला नहीं है। ओनली शहीर सिंह मिस करा दें। इतने सारे बच्चे हैं यार, 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि मिस करा दें। 3 ने कहा कि मिस करा दें, 4 ने कहा मिस करा दें। 4 कह रहे हैं मिस करा दें। और बताएं। 4 ही हैं कह रहे हैं मिस करा दें, बाकी कह रहे हैं कर दूं। चलो लेट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं क्या, चलो चलो चलो, लोअर योर हैंड्स एवरीबॉडी, चलो चलो चलो। लोअर कर दें, लोअर, मेरी शक्ल नजर आनी चाहिए। वही शक्ल नजर आनी चाहिए, आई एम क्रेजी। Everybody, let's move on to the 2023 set. And the first question of the 2023 set says infrared spectrum of compound L is showed. Now, compound L, see, this is not a broad peak. Please try to understand this is not a broad peak. Look at this and this. See, when it is carboxylic acid, it's just wow. This, but this is not carboxylic acid. See, this is the peak for the alcohol because this is not a very broad peak. This is alcohol ka peak right here. This is the OH of the alcohol.
So then what is this fella? This is the CH peak, which is masked by the OH of the acid when it's the broad peak. भाई ये दो तीन चीजें आपको पता हो, गेम गेम ऑन है, गेम ऑन है, राइट, गेम इज ऑन। अच्छा, व्हाट इज दिस पीक राइट हियर, 1000 से 1300 में, अब ये भी मुझे याद हो गई, आई डिड इट इन द लास्ट 2024 सेट, ये 1000 से 1300 में ये पीक क्या है, 1000 से 1300 में बताएं जी, व्हाट इज दिस पीक, 1000 से 1300 में जी, दिस द सी ओ पीक, सी ओ पीक, राइट हियर। तो ये भी मैंने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की, एक सवाल तो मुझे पता लग गया। अच्छा, डू वी हैव कार्बोनिल, डू हैव सी डबल बॉन्डेड टू ओ, वी डोंट सी, इफ इट वाज सी डबल बॉन्डेड टू ओ हियर 1700 में इधर पीक आ रही होती मेरे पास, बट कोई पीक पीक नहीं आ रही 1700 में, 1600 में, 1700 में, if there was, and that's why this can even further prove that this is not the acid, because if it was the OH of the acid then you will also have a peak right here। दो तीन जगहों से आप सोच सकते हैं, बात खत्म, आगे जाएं। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल, बस सिर्फ यही पूछा है, कंपाउंड एल का पूछ दिया हुआ है और कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं, एल में सी डबल बॉन्डेड टू ओ हो सकता है, is C double bonded to O peak present in L? This is the CO peak, not the C double bonded to O peak. This C double bonded to O peak इधर 1600 1700 में बन रहा होता है, बताएं जी। Is C double, is can A be my option? No, because A is saying you have CO here. It does not have any C double bonded to O. This is basically, if you want to show it, if your structural formulas are weak, this is basically the structure. You don't have, maybe this is present, maybe this is also present, but you don't have this fella. So A is wrong. Then you have CHO, aldehyde. CHO is aldehyde, na? C double bonded to OH. If it was aldehyde, again, you would have gotten A peak at 1700 again, because aldehyde में भी C double bonded to O होता है, तो B भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। C में देखें और D में देखें, D में it's carboxylic acid. If it was carboxylic acid, firstly you would have a broad peak, and secondly the OH broad peak, and secondly you would also have the C double bonded to O peak, which is empty. D is wrong, C should be my answer। ये यार, ये एनालिटिकल के सवाल तो यूं ही होते हैं, ये एनएमआर तो नहीं है। एनएमआर में बहुत सोचना होता है अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है। मैं अगर एनएमआर का सवाल 10 सेकंड में करूं तो मुझे उसको एक्सप्लेन करने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, आई एम नॉट जोकिंग। इसलिए स्टूडेंट्स भी दम तोड़ के हार जाते हैं, रहने दे वे। यार इतने आसान एमसीक्यूज है ना, मैं क्या कहूँ। The, the mass spectrum of compound J is in the ratio of the height m plus 1 ion peak to the height of m peak। मुझे पता है m और m plus 1 का, पहले मुझे बताएं m और n plus 1 का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, 100 रेशो 1.1 n, ये इसका रिलेशनशिप है। अच्छा कह रहे हैं कि m पीक, m प्लस 1 पीक का जो हाइट है दैट इज 4, एंड m आयन का पीक का जो हाइट है दैट्स 91, दैट्स द अबंडेंस। तो m प्लस 1 इज लाइक 4 एंड m पीक इज 91, उल्टा करके लिखा हुआ है। सी m प्लस 1 पहले लिखा है फिर m लिखा है, तो m प्लस 1 उसने पहले लिखा है फिर m लिखा है, और m प्लस 1 का 4 बता रहा है और m पीक का 91 बता रहा है। ठीक है, देन यू जस्ट कैलकुलेट n, क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यू गेट, 100 times 4 equals 91 times 1.1 n. N tells you the number of carbon atoms. 100 times 4 divided by 91 times 1.1, क्या आ रहा है जी, बताएं जी, क्या आ रहा है, बताएं बताएं, कोई बताए, शाबाश शाबाश, जल्दी बताएं यार, सिंपल सिंपल बताएं। सर 3.994, 3.99, n will always be a whole number, तो ये 4 है, because n represents the number of carbon atoms, का atom cannot be 0.99, तो बिल्कुल 4 होगा, राउंड ऑफ करते 4, 4 कार्बन एटम्स। अच्छा 4 कार्बन एटम्स, अच्छा अब 4 कार्बन एटम्स तो है, तो जी प्रोपैन 1 होल तो नहीं हो सकता, ये तो गया, प्रोपैन 1 होल तो 3 कार्बन एटम्स है। नेक्स्ट, सर वो कह रहे हैं कि कंपाउंड जे जो है, it forms a carboxylic acid when heated with acidified potassium मैंगनेट। अच्छा क्या वो ऐसी चीज है जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है when you heat it with acidified aqueous potassium मैंगनेट, it can either be an aldehyde or a primary alcohol, ऐसी है। अब प्राइमरी अल्कोहल तो ऑप्शंस में नहीं है, द प्राइमरी अल्कोहल, द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट यू हैड इन द ऑप्शंस वाज दिस, बट इट डज नॉट हैव 4 एटम्स, प्रोपान 1 हैज 3 एटम्स, सो दिस इज गॉन, सो यू रियलाइज दैट इट मस्ट बी एन एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कौन सा है सर, एल्डिहाइड आपके पास है जनाबे वाला ए, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स 16 17 18, ऑल द 3 आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन which were analyzed in the mass spectrometer. How many peaks associated with O2 plus ion would be expected? O2 plus ion के साथ क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि दोनों 16 हो, ऐसे ही ना, दोनों 16 हो, या हो सकता है एक 16 हो एक 17 हो, या एक 16 हो एक 18 हो, ऐसे एक एक करके करें। देखिए फर्स्ट मैंने 16 लिया और अब इसको मैं चेंज करूं, जस्ट डू दिस, 16 लिया, इन तीनों को चेंज किया, फिर 17 लिया,
17 के साथ 16 हो सकता है, 17 के साथ 17 हो सकता है, 17 के साथ 18 हो सकता है। ये देखिए, ये तीन मैं बदल रहा हूँ, एक इधर इंक्रीज करता हूँ। दिस इज हाउ यू डू इट। या आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन से करें, या आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन से करें, और या जो है आप इस ऐसे करें, ऐसे ज्यादा बेहतर है, बिकॉज वी आर नॉट मैथमेटिशियंस। सो 16 था, इसके साथ ये लगा दिए, 17 था, इसके साथ ये लगा दिए, फिर इसको बदल दें, क्या करें, 18 कर दें, और 18 के साथ 16 हो सकता है, 18 के साथ 17 हो सकता है, और 18 के साथ 18 हो सकता है। अब इनमें देखें फर्क किधर है। 16 16 दैट्स न्यू, 17 17 दैट्स न्यू, 18 18 दैट्स न्यू। अच्छा, 17 16 इज द सेम थिंग एज 16 17। 17 16 16 17 एक ही चीज है। तो इधर मैं क्रॉस सेकेंड, इसको मैं एक दफा काउंट करूंगा ना, 17 16 और 16 17 को मैं एक दफा करूंगा। देन अब क्या करूं, 16 18 इधर है, 16 18, बल्कि इधर मैं कर लेता हूँ, ओके, 16 17 और 17 16 ये एक ही है, ठीक है। फिर 16 18, इसको प्लस करके भी आप लिख सकते हैं। 16 18 कितना है, 20 28, 28 प्लस 6 इज 34। तो 16 18 और 18 16 ये भी एक ही चीज़ है। तो मैं इसको एक दफ़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, और या ऐसे करें, चले, ये 35 है, इसको ऐसे करें, 35 है, ये कितना है 32, इसको बताएं ये कितना है 17 16, सॉरी 35 नहीं है, क्या है 33, 17 16 33, 17 17 34, 17 18 कितना है 35, 18 16 34, 18 17, बताएं शाबाश, 18 17 35, 18 18 36। तो जी आपके पास कितने हैं इफेक्टिवली, देखें, 32 है 1, 33 है 2, 34 है 3, 33 ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 34 ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 35 है चौथा, 34 ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 35 ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 36 है 5। ऐसे कर ले, ये ज़्यादा आसान है, बजाय कि ज़बानी करें सबको ऐड कर दें। तो ये है इफेक्टिवली 32 33 34 35 एंड 36, 5 है, 20 दी ऑप्शन है ना। बिल्कुल 17 17 इज इक्वल टू 16 18, बिल्कुल यू आर राइट। सर चार्ज क्यों है, क्योंकि ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जब डिटेक्ट होते हैं मुइस, तो इसको पहले आयनाइज किया जाता है, वेपराइज, आयनाइज, एक्सेलरेट, accelerate, deflect, detect. Although you don't need to know how a mass spectrometer works, I've taught it in my life class, इसके काम कैसे करता है, इसलिए इस पे चार्ज होता है, इसलिए तो यू गेट एम जी रेशो क्या है कि मैस और चार्ज का रेशो क्या होता है, और हमेशा +1 होता है। जब +2 होता है तो वो पीक बिल्कुल उधर चली जाती है। एक सवाल भी थ्योरी में आया है कॉपर का, वो कर लें एक दफा, मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, चैप्टर नंबर 1, गो ऑन टू माय यूट्यूब, चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी के सवाल कर ले, उसमें ऐसे एक चीज टेस्ट हुई हुई। करता जाऊं, बताएं यार, मुझे मसला नहीं है, मैं करता जाता हूँ। अच्छा, बाय द वे यू कैन चेक द मार्किंग स्कीम्स ऑन योर ओन, आई डोंट केयर, चेक करिएगा, आप खुद चेक करिए। There are two naturally occurring isotopes of bromine. One of the isotopes have 14 neutron, 44 neutrons, and the other has 46 neutrons. Bromine के बताएं जी जरा, bromine का proton number बताएं कोई। Bromine proton number is 35. And one is saying that one of the isotope has 44 neutrons. So what should be the mass number? Sir, आपको पता है mass number is the total number of protons plus neutrons. It's also known as the nucleon number. तो 40 plus 30 70, 70 plus 9 79, ये 79 है। Similarly here वो कह रहे दूसरे का 46 है, तो 35 protons 46 neutrons, that's the mass number. What does this give me, 81? तो this is 79 81 ना। ऐसे सोचता हूँ, ऐसे देखिए आप, हैव यू गाइस वॉच्ड दैट रील, ऐसे देखिएगा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा भाई इधर है, ऐसे देखिए आप, ये देखिए चॉकलेट, ये देखिए चॉकलेट, ऐसे देखिए आप, ऐसे देखिए आप, रोजा है ना सबका, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, 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 रोजा है ना सबका। अरे यार, सर नॉर्मली माई डैड एंड माई मॉम सिट्स विद मी व्हेन आई टेक क्लासेस एंड दे लव योर वे ऑफ टीच। और नहीं यार, क्या कर रहे हो, अम्मी अबू के साथ मेरे क्लासेस देख रहे हो, मुझे क्यों हत्ती पे चढ़ाने हैं तुम लोगों ने, मारने हैं। एक ही बंदा हूँ आप लोगों के लिए, इतना कर रहा हूँ, मर जाऊंगा कहीं, केस हो जाएगा मेरे खिलाफ। आगा ड्राई फ्रूट, रजान किधर है, आवा भाई इधर है। आई एम सो लेम, हेट इट, हेट हाउ लेम आई एम। अच्छा, एमसीक्यू क्या, कौन सा एमसीक्यू कर रहे हैं हम। अच्छा हाँ, ये करें, कह रहे इग्नोरिंग फ्रैगमेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली नॉर्मली फ्रैगमेंट्स आर टेस्टेड इन A2 केमिस्ट्री। सो आपको पता है ना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कभी कभार मॉलिक्यूल को टूट टूट के भी हो जाते हैं, फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, बट इन इन आर
Cambridge course is in A2 chemistry. He's saying how many peaks are there in the mass spectrum of this? See, now there are three bromines. अब सही है, तीनों 79 हो सकते हैं। फिर अब मैं क्या करूंगा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। इस तीनों 79 हो सकता है, एक 79 हो सकता है, सॉरी दो 79 होके एक 81 हो सकता है। नहीं, मैं क्या करूं, पहले इसको, अब पहले तीनों मैंने एक लिए हैं, अब मैं क्या करूं, इसको एक को बदल रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा, दो को बदलूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, तीनों को बदलूंगा। सो 79, अब ये 8 79 79 81 मैंने लिखा है, अब इसको भी 81 करूंगा, 81 81 81। और फिर क्या करूंगा, इसको आखिरी वाली को भी बदल दूंगा, 81 81 81। कितने आ गए, वन, 1 2 3 4, 4, सी इज द आंसर। अच्छा, अगर कोई कहे मैंने 79 से नहीं शुरू करना, मैंने 81 से शुरू करना है, तो 81 81 81 कर लें, फिर 81 81 79 कर लें, फिर 81 79 79 कर लें, और फिर 79 79 79 कर लें। एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? बिकॉज इफेक्टिवली you either start from there to go and go here, or start from here and go here. It's the same thing. Like, 79 79 79 79 79 79 79 81 79 79 81, same thing. ये है यार, ये आपके क्वेश्चन हैं। माई इंटायर फैमिली नोज यू, जैसे इतना एनर्जेटिक कौन है? नहीं नहीं, एनर्जेटिक बनना पड़ता है यार, वरना तो सारे सो रहे हो क्लास में केमिस्ट्री की। तो मेरा अपना इतना काम पेंडिंग है ना, सो मच वर्क इज पेंडिंग मेरे सर पे। टैक्स टैक्स चोर है पाकिस्तान में, इतने टैक्स चोर हैं कि टैक्स का काम। खैर, आई एम नॉट इन द टैक्स डिपार्टमेंट, आई एम जस्ट हेल्पिंग अ फ्रेंड आउट। टैक्स का इतना काम है, तबाही है यार। मैं अपना अपना पर्सनल इतना काम पड़ा हुआ है। अरे चोर हैं, सेल्स टैक्स के चोर हैं, इनकम टैक्स के चोर हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में फिर टैक्स क्यों दे कोई? टैक्स क्यों? सॉरी, आई एम राइटिंग अबाउट माई माई प्रोफेशनल साइड ऑफ द ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई करियर। मतलब अगर आप 60 करोड़ कमा रहे हो, इफेक्टिवली आप 60% उस पर टैक्स देते हो। 60 करोड़ का 60% 36 करोड़ है। 60 करोड़ में से 36 करोड़, 36 करोड़ आप टैक्स देते हो। तो कौन देगा टैक्स? इफेक्टिव रेट की बात, कौन देगा टैक्स? 60 करोड़ अगर आप साल का कमाते हो तो 36 करोड़ टैक्स है। किसका बाप नहीं देता टैक्स यार? ये हाल है पाकिस्तान, ना कोई टैक्स है, ना एफबीआर जो है, एफबीआर जो है वे बोंगियाँ मार रहे होते हैं। सॉरी अगर किसी के फैमिली में एफबीआर अच्छे लोग हैं, बोंगियाँ मार रहे होते हैं, ना उनका विल है, ना उनका कुछ है। बकवास है पाकिस्तान, ना विल है, ना कॉम्पिटेंसी, कुछ भी नहीं। खैर, आई एम नॉट इन द टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे आप प्लीज़ आप अपने टैक्स रिटर्न्स ना भेजिएगा, मैं मुझे नहीं आता। द डायग्राम शोज द relative abundance of different isotopes of lead in a sample equal to, in a sample of lead ore, the abundance of 208 is half that 206। 208 की abundance वो कह रहा है half that 206 है। अगर 206 दो है तो 208 1 है, इट्स हाफ ऑफ इट, राइट? ऐसे ये देखिए, टू ऐसे देखिएगा, ऐसे ये देखिए, दो है और ये इसका आधा है। अगर ये दो है तो ये इसका आधा है, 2:1। डन। कह रहे द abundances ऑफ 208 एंड 209 आर इक्वल। तो अगर ये वन है, ये भी वन है। आई एम नॉट इवन गोना लुक एट द ग्राफ। वो कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने रेशोज मुझे बता दिए उसने, मुझे इधर देखने की जरूरत नहीं है, ये 50 है, ये 25 है, ये 25 है, दफ़ा हो, मुझे ये नहीं करना। मैं कहूँगा 208 टाइम्स बाय 1 प्लस 209 टाइम्स बाय 1 प्लस 206 टाइम्स बाय 2। कह रहे हैं ना 206 दो है, डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेटर में ये ज़्यादा आसान है पुट करने। हाँ, यू कुड हैव आल्सो डन दिस, इंस्टेड ऑफ 1 यू कुड हैव एडेड 25%, इंस्टेड ऑफ दिस 1 यू कुड हैव एडेड 25%, एंड इंस्टेड ऑफ दिस 2 यू कुड हैव एडेड 50, जस्ट लाइक गिवन इन दी इन द ऑन द ग्राफ। दोनों में से कोई कर लें जो मर्जी। फिर इधर टोटल अबंडेंस फिर क्या होती है, 100 होती। सो व्हाट्स दी एआर गाइस, बताएंगे? 207.25। आई एम ट्रस्टिंग यू यार, प्लीज समबडी कंफर्म दिस। 207.25 ही है। जुनेद कह रहे 207 आ रहा है। जुनेद 207 तो फिर ए बनता है यार। 207.25 है कि 207 है, बता दें। 207.25, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, द mass spectrum of a compound has m, compound x has m peak, m plus 1 peak, m plus 2 peak. This is what you need to know in AS level। वो बिल्कुल 2024 का जो एमसीक्यू था ना, जिसमें एक्स वाई जी था, क्लोरीन का हमें मैस स्पेक्ट्रम की जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई कंपाउंड एक्स हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हो, उसमें एम पीक है, तो दैट वुड बी द molecular ion peak। m plus 1 would be because of the carbon 13 isotope। m plus 2 is going to be because of what? m plus 2 is going to be because of either the chlorine atom or the bromine atom, right? That's why m plus 2 peak
इज गोना बी ऑब्जर्व बिकॉज एम पीक में क्लोरीन जो है वो अगर प्रेजेंट हो तो 35 में मौजूद होगा, और ब्रोमीन अगर मौजूद हो तो दैट वुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 79। और एम प्लस टू में क्या होगा, ये दोनों में कार्बन जो है 12 है, इधर भी एम प्लस टू में भी कार्बन 12 होगा लेकिन क्लोरीन वुड बी 37। तो ये देखें, इसलिए एम प्लस ऐसे देखिएगा आप, 35 से 37 पे जमा रहे और या 79 से 81 पे। तो दैट्स द आइडिया। तो एम प्लस टू पीक, और हमें कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो दैट एम प्लस टू पीक ईदर हैज chlorine or bromine? If it's bromine, then the M and M plus 2 peak should be in the ratio of 1:1. If it is chlorine, then the M and M plus 2 peak should be in the ratio 3:1. ऐसे देखिए आप, अब वो क्या कह रहे हैं, M and M plus 2 P are equal in height। तो कौन सा मौजूद है, कौन सा नमूना मौजूद है, बताएं जी। विच नमूना इज मौजूद। अच्छा, ये एक ब्रोमीन एटम और एक क्लोरीन एटम की बात हो रही है, दो की नहीं, दो का फिर कुछ और बनेगा, वो आप A2 में पढ़ेंगे, दो टेस्ट नहीं होंगे आपके ऐसे। एम एन एम प्लस टू पी इक्वल इन हाइट, दैट मीन्स द बी आर इज प्रेजेंट। तो जी पहले ए और बी तो ये तो गए, बट फिर आगे बढ़े। Other peaks are also present. The M peak and the M is the molecular ion peak. Oh, thank you. We didn't even know that. Oh, wow. Thank you so much. The M has a relative abundance 15 times of M plus 1. तो कह रहा है कि जी M peak और M plus 1 peak में फ़र्क क्या है। The M peak has 15 times abundance compared to, तो इसको मैं 1 और 15 कह सकता हूँ, या इसको आप 1 और 15 कहें, या अगर आप इसको 15 टाइम्स और 1 नहीं कहना चाहते, आप एक रैंडम नंबर अस्यूम करें, 15 इसको कह दें, 1 कह दें, या कहें कि अच्छा अगर M जो है, अगर M plus 1 5 है तो दिस वुड बी 15 टाइम्स 5। इट्स द सेम थिंग, you can assume a number, you could just call it 15:1, it's up to you। या 15:1 करें, या देख लें अगर मैं कहूँ जी M plus 1 peak is 5, तो what should be the M peak? The M peak should be 15 times the M plus 1 peak। है, तो what is that? That gives me what? That gives me 75:5। And what is the relationship that you need to know between the M peak and the M plus 1? 100:1.1 n। Calculate n please। N equals 100 times 5 divided by 75 times 1.1, that gives me n। मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 6। जनरेशन एन 6 आ रहा है, एवरीबडी एग्री विद मी। तो 6 एन होंगे। अब सी और डी में देखिए 6 एन किधर है, 2 मिथाइल, मिथाइल का मतलब है 1 कार्बन, हेक्सेन का मतलब है 6 मोर कार्बन, दिस गिव्स मी 7 कार्बन। सी इज रॉन्ग, वी जस्ट हैव टू हैव 6 कार्बन। ब्यूट मींस 4 कार्बन। डाई मिथाइल, एक मिथाइल मींस 1 कार्बन, डाई मिथाइल मींस यू हैव 2 मिथाइल, सो 1 + 1 + 4 दैट गिव्स मी अ टोटल ऑफ 6 एंड डी इज करेक्ट। बताइएगा जी, मतलब कोई मुश्किल हो रही है। Infrared spectrum is shown. This is neither OH of alcohol. This is neither, because you've seen alcohol का OH look something like this. This is neither the OH of alcohol nor is it the OH of the acid। तो फिर ये क्या रह गया, इस जगह में फिर आपको दूसरी क्या चीज़ नज़र आती है, बताएं। इस जगह में आपको दूसरी क्या चीज़ नज़र आती है, द सी एच, द सी एच। और ये सी एच या एल्डिहाइड को ऐसे जब पीक आती है, इट्स द सी एच, बट इट्स ईदर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। डू यू नो हाउ आई नो इट्स द एल्डिहाइड और कीटोन? बिकॉज यू ऑल्सो हैव सी डबल बॉन्डेड टू ओ हियर। So you have a carbonyl here. Now, if you have a carbonyl and it's neither an acid nor is it an alcohol, so if it's not an acid, तो फिर दो और carbonyl क्या रह गए, ketone and aldehyde, and this is the CH of either the ketone or the aldehyde। That's all I need to know। I don't even want to go into this, but this is the fingerprint region for me at this point। बस सही है, मुझे पता लग गया। Options देखिए, which compound will give this spectrum? C double bonded to OOH, this is carboxylic acid, and it would have been given you a broad peak। A is wrong। दिस इज एन अल्कोहल, अल्कोहल का तो मौजूद ही नहीं है कोई। सी डबल, दिस इज प्रोपेनोन, सी डबल बॉन्डेड टू ओ, यस यू हैव बीन गिवन द सी एच बॉन्ड्स and the C double bonded to O is also present, so C should be correct। is it aldehyde? aldehyde भी हो सकता था लेकिन aldehyde given नहीं है, देखें aldehyde नहीं है। this is also C double bonded to, अच्छा sir why can't it be D? it also has C double bonded to O, CH2, CH3, but it also has OH and you don't see any OHs। if it were any OH मौजूद तो फिर आपको पीक नजर आती, तो D is also wrong। खत्म, ये लें जी, 2023 सेट भी हो गया। मौजे करें, मस्ती करें, बस यार, बस 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 बस, काफी। एल्डिहाइड भी हो सकता है शाइस्ता, और कीटोन भी हो सकता है शहीता, सॉरी शहीता, वेरी यूनिक नेम शहीता। अशोक, ब्यूटीफुल नेम। एनी क्वेश्चन गाइस पूछेगा। सर आपने एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़ा दी बेटा, मैंने पूरा ए लेवल्स का कोर्स खत्म करा दिया अपने ए लेवल के स्टूडेंट्स के साथ।
सर एएस लेवल पास्ट पेपर सेशंस व्हेन, ये पास्ट पेपर्स ही तो मैं बच्चों के साथ कर ही जाता हूँ और फिर उनके पोर्टल पे डाल देता हूँ। पास्ट पेपर सेशन अगर मैं रखूंगा, आई जस्ट सॉल्व द 2025 पेपर्स देयर, एंड देन ऑल द अदर पेपर्स दे आर सॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस टॉपिकल फॉर्मेट। तो आई ऑलवेज ऑलवेज सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि आप 2025 के पेपर्स करें, डू द 2025 सेट पेपर्स ईयरली में, और उसमें जो गलतियां हैं उसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन से रिजॉल्व करें। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। अगर आपको इसके अलावा टीचर ने कुछ कहा है तो बकवास करें। मेरे नज़र में ये सबसे बेस्ट अप्रोच, दिस इज माई नज़र, इन माई नज़र दिस इज द बेस्ट अप्रोच। जब मैं 2025 के सेट कराऊंगा, जिधर आपसे गलती होगी उसके टॉपिक वाइज सोल्यूशंस आपके फिर पोर्टल पे पड़े होंगे, वो आप करें, एंजॉय करें, चिल करें। नेक्स्ट क्लास टाइमिंग डोंट नो सर। कुछ टीचर्स बोल रहे हैं 2015 तक ईयरली करो, उनको कहो बेटा आपकी जगह वो कर लेना, खुद उनसे होती नहीं है और आपको कह रहे हैं कि कर लो। दिमाग खराब है यार टीचर्स का। यार आप खुद सोचें यार, मतलब आपने एसएटी नहीं देना, आपने यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस पे काम नहीं करनी, आपने सुपर करिकुलर्स नहीं करने, आपने बस सिर्फ पढ़ना ही है। बस यार पढ़ाई को दफा करो, बस है यार, बहुत पढ़ लिया है, खत्म करें, फिनिश इट ऑफ। मतलब इतना टेंशन मत लें। आप अपनी कॉन्सेप्ट्स को ठीक है, देखिए मेरी बात याद रखिए। मैंने मैंने ये एमसीक्यूज पहले नहीं की ना, आपके साथ ही की हैं, जो जो किए हैं आपके साथ ही किए हैं। मैं दावा करता हूँ गलती नहीं होगी, होगी मुझे ज़रूर बताइए, लेकिन नहीं होगी गलती। क्यों? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो याद रखिए कुछ टीचर्स जो हैं, ये तो बस, मैं तो अपने आप को भी टेस्ट कर रहा होता हूँ ना। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड यार। हाँ यू आर राइट, डॉट सिंह सर हम 2025 की करें और बाकी टॉपिकल करें, बिल्कुल, एब्सोल्युटली डॉट। दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। मैं भी, अब हर टीचर का अपना एक स्टाइल है यार, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन यार टॉपिक वाइज में असल आपकी टेस्टिंग उधर होती है, आपके पैटर्न रिकग्निशन उधर शुरू हो जाती है। हाँ आपने सारे टॉपिक वाइज खत्म किए हुए हैं, आपने सबको, फिर बस सारे ईयरली करें फिर तो कुछ नहीं रहे। 2025 के ईयरली करें एक पेपर, देखें उधर गलती किधर हो रही है, किस चैप्टर में गलती हो रही है, टॉपिकल बुकलेट मेरी खोलें और उसको खड़का दें उस चैप्टर। ऐसे खड़काएं कि A to Z 2002 तक सवाल कर ले बेशक। 2002 तक ना कीजिएगा, 2016 तक से नीचे मत जाए, लेकिन 2002 तक चले जाएं, 1999 तक चले जाएं फिर। अजीब ही है यार। सही बात है, टीचर्स बड़े अजीब हैं यार। उनको कहें आपसे, आपने खुद कभी किया 2015 तक? जब आपको ये लोग कह रहे होते हैं कि 2015 तक करें, उनसे कहें आपने कभी खुद किया है? वो आपको कहेंगे नहीं मैं आपका टीचर हूँ, मैं क्यों खुद करूंगा। तो बेटा आपके टीचर ने ए लेवल्स किया था पहली बात, और जब ए लेवल्स में वो था तो उसने ये किए थे। मेरा नाम सुलेमान नहीं होगा अगर उसने 2015 तक पेपर्स किए हों, खैर उसने तो किए होंगे क्योंकि शायद वो 2015 में ही बन रहा होगा। लेकिन उसके लिए अगर उसने 15 साल के पेपर किए हो, आपका कोई टीचर हो और उसने ए लेवल आपको पढ़ा रहा हो, और वो कह रहा है कि मैंने ए लेवल में 15 साल के पेपर किए हैं, अल्लाह की कसम वो झूठ बोल। मैं खा के कैसे यार, दिमाग खराब, 15 साल के पेपर, 15 साल यार, हर पेपर की 3 कंपोनेंट्स हैं, ये देखिएगा जरा, हिसाब लगा ले, हिसाब लगा ले। 15 साल पेपर वो कह रहे हैं मैंने किए, हर पेपर। अब 15 साल के उसने कह रहे हैं कि मैंने थ्योरी भी की है, एमसीक्यू भी किया और प्रैक्टिकल भी किया। 3 पेपर्स होंगे, और इन 3 पेपर्स के एक सेशन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो 9 हो गए, 3 × 3 9, 9 हो गए ना, 3 × 3 9, और मल्टीप्लाइड बाय एक सेशन में, मल्टीप्लाइड बाय हर साल में 2 सेशन होते हैं, 15 × 9 × 2, उसने 270 पेपर्स किए हैं और फिर 3 सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 मिनिमम लगा देते, 810 पेपर्स उसने किए। बकवास कर रहा है, मैं इसकी टांग बकवास कर रहा है। सर कह रहे कंप्लीट पीएच पाकिस्तान है P1 and P2 केमिस्ट्री ऑन अल्टरनेटिव डेज, यस। 810 पेपर कोई कर सकता है? बता के मुझे बता दें 810 पेपर्स किसने किए हैं। अगर ऐसे होता तो वो जो लड़की है जिसने 26 से स्टार्स लिए हैं कि 27 ईयर्स लिए हैं, उस वो कर सकती थी फिर ये। अगर वो 810 पेपर्स करती तो वो 26 27 स्टार्स ले सकती थी। दिमाग को, अक्ल को हाथ मारे। ये टीचर्स झूठ बोल रहे होते हैं यार, आपस की बात झूठ बोल रहे होते हैं, बस क्या ही कर सकते हैं। कैन आई डू पास्ट P1 and P2 ऑन अल्टरनेटिव? यस यस, करें करें ना करें। मतलब झूठ है ना, आपको मैंने ह्यूमनली बता दिया पॉसिबल नहीं। चलिए खुश रहें।